नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल आरजे अमिता की बात में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने अगले वीडियो में आपको इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक एक और दिखाएंगे। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक की ज़्यादा डिमांड पर हम आज आपको दो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले ड्रिंक दिखाएंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी रहेंगी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कौरपुरी। बने रहिएगा हमारे इस चैनल आरजे अमिता की बात के साथ। दोस्तों, एक और मैसेज हमारे पास आया है। छतरपुर में हमारी एक दर्शक हैं जिनका नाम है संध्या। वो कह रही हैं कि उन्हें शैली जी का जो फिटनेस का वीडियो था बहुत पसंद आया है, और साथ ही वो डॉक्टर अमित कौरपुरी जी के जो ड्रिंक्स हैं वो समय समय पर अपनी फैमिली को मिला रहे हैं। पर उनकी एक गुजारिश है, वो कह रही हैं कि साथ ही साथ अमिता, आप अपने चैनल में ब्यूटी टिप्स को भी इंक्लूड कीजिए। तो संध्या, मैं आपका जो मैसेज है शैली जी और डॉक्टर अमित कौरपुरी जी तक पहुंचा दूंगी, और साथ ही साथ हमारी कोशिश रहेगी आपने जो डिमांड की है ब्यूटी टिप्स, वो भी हम किसी एक्सपर्ट से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है क्या है, चलते हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कौरपुरी जी के पास, जो हमें सिखाएंगी दो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। चलते हैं। Today we are going to make a part 2 of this special immunity booster drink since you guys like the first part so much. And this is very simple. So for this we need Nigella sativa seed, which is also known as Kalonjika seeds. If you are having kalonji seeds at home, just boil 1 teaspoon of kalonji seeds in 2 cups of water. You can have that drink, or you can also prepare oil, as I have prepared oil, kalonji oil at my home. My mom prepares everything at home, but you can get it in market also. Absolutely. If you cannot make it at home. So we are consuming kalonji oil in our drink. Just pour the lukewarm water in these 2 glasses. Just more. Okay. Thank you. Thank you. Pour half teaspoon of kalonji oil to each of the glass. Okay. Just half teaspoon. Okay. Thank you. Okay. Stir it properly. So guys, we are ready with the immunity booster drink number 2, and which has half teaspoon of kalonji oil in lukewarm water. And it was so simple. So simple, but it is very powerful, because I really believe that simple things are more powerful. Yes. Cheers to that. Cheers. Hi and welcome back to Immunity Booster Challenge number 3. Today we are going to make chit for boosting our immunity. Do you know why immunity boosting is important? Why? Immunity boosting is important for so many reasons, but the most important one right now is to provide resistance against the viruses and bacteria during this pandemic. Yes. So we are here with immunity booster chit. And do you know what ingredients we are using? Well, I can see them. Yeah. So we are using 2 medium-sized bulb of garlic, 2 inches of ginger, 1 teaspoon of black peppercorn, 1/4 teaspoon of turmeric, and salt to taste. Apart from this, we are also using 1 teaspoon of desi ghee and 3 cups of Water. That's right. So we have to make the paste of garlic and ginger. We have to powder black peppercorns. We have to powder haldi or the turmeric, and then we have to roast the paste of garlic and ginger in desi ghee by putting small amount of water. And when the aroma starts coming, you have to put black peppercorn powder, turmeric powder, salt into that, and put 3 glasses of water. Allow it to boil for some time. Add 1 teaspoon of curd in it. It's optional. It's up to you whether you want to add the curd or not. And you can have warm and hot curry of garlic and ginger with full cast.
ready to eat fulkas. Now you know why we are using these things. Why are we What is the using it? reason? Yeah, there's a pretty long reason for this. Okay. Because garlic is having a phytochemical compound known as allicin. Similarly, ginger is having gingerol and turmeric is having curcumin. So all these phytochemical compounds are so strong that it builds our immunity to the next level. 100% immunity is built up inside our body because of this phytochemical compound. And adding peppercorns is very important because turmeric will only be assimilated and absorbed in the body because of presence of this black peppercorn. That is something I did not know. Yes. So why are we using curd though? Curd we are using because it is very hot. You know, it is very hot. Okay. So when you ingest it, when you take it, there should be some mild, good flavor, and it should be a bit lighter, bit on the lighter side. Yes, so you're it is right. optional. It's optional, and during summers, if you're consuming, you should add curd. But in winters, there is no need of adding curd. So we are here with the prepared chit. You can taste it. We have already done. The consistency is like it. You eat and you let the audience know. It actually tastes very good. You should also try it. I at times put lemon in it for taste, and it tastes splendid. This is my favorite. We are Punjabis, and Punjabis like chit. Yes. And so after eating it, we do bale. तो दोस्तों आपको ये दोनों ड्रिंक्स बहुत पसंद आए होंगे और मैंने भी बना लिया है डॉक्टर अमित कौर पुरी जी ने जो हमें बताया ड्रिंक। अब मैं इसे टेस्ट करके देखूंगी कैसा है और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने भी ट्राई किया तो आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक कैसा लगा। और जो आपकी डिमांड है ब्यूटी टिप्स भी हम दिखाएं तो वो भी हमारी कोशिश रहेगी आपको दिखाने की। अगले वीडियो में हमारे साथ होंगी एनएसडी की एक स्टूडेंट और एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म में वो आ चुकी हैं, उनके साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और साथ ही शैली जी के जो नंबर्स हैं जो उन्होंने 3 तक बताए थे, आगे के नंबर्स भी हम अपने दोनों एपिसोड्स में आपको दिखाएंगे। और साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ कानूनी सलाहकार। तो बने रहिएगा आरजे अमिता की बात चैनल के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।